Psalm number 30, background study of Psalm 30. Somebody read the heading, main headings, the subheading, and verse 1 and 2. The morning, a song of David, a song at the dedication of the temple. So the context is very clear there, but the doubt is, दाऊद का समय में टेम्पल को कब डेडिकेट किया था? Where you can find the dedication of temple during the time of David? It speaks about temple, not Sandhu. But it says as dedication of the temple. What does it mean by dedication? बना के ribbon cutting. So when it happened? दाऊद उस समय तक मर गया क्योंकि जब सुलेमान था सुलेमान ने ही डेडिकेट किया. दाऊद was not there. That is not dedication. डेडिकेशन होता है सब खत्म हो गया, फिर रिबन कटिंग, अंदर घुसना, गृह प्रवेश, हाउस वार्मिंग. Psalm 30 is a profound expression of thanksgiving and praise attributed to King David. It is a psalm that celebrates deliverance from distress and the restoration of life and joy after a period of suffering. So बहुत बड़ा क्राइसिस, सफरिंग, मुसीबत, दर्द के बाद एक खुशी का जीवन इन लोगों का जीवन में आया. A context of joy came into the life of these people. Then they are singing this song with a heart full of joy, and that points to dedication of temple. मंदिर का डेडिकेशन ऑफ टेम्पल का हिंदी क्या है आप लोग खुद लेके रखना, मैं भूल गया. गृह प्रवेश, मंदिर का प्रवेश, समर्पण, प्रतिष्ठा. The psalmist acknowledges God's intervention during turning mourning into dancing and sorrow into joy. दुख को खुशी में, बड़ा मुसीबत को एक अच्छा गवाही में बदलने के अनुभव से भजन संगीतकार और वहां का लोग चले गया. वो कहानी, वो बात है इस भजन संगीता से हमको भजन संगीतकार समझा रहा है. अभी रीड वर्स 1 and 2. I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cried to you for help, and you have healed me. Read. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restore me to life for among those who go down to the pit. Sing praise to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a So time. it starts with I will extol my. So it is a personal prayer in the beginning. So I told you the context almost says like dedication of the temple, and it has different views regarding that heading. Some says according to 2 Samuel chapter 5 verse 11, 1 Chronicle chapter 15 verse 1, when David constructed a house for himself, he constructed a house for himself. During that time, for the dedication of the house, he might have sang this song. समझ आया? व्यू क्या है? दाऊद ने उनका खुद की घर बनाकर उसका डेडिकेशन के समय में शायद इसको इस भजन को गाया होगा. और मे बी इन ए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, or maybe for a future expectation, just like Praveen said, when they gathered everything for the construction of the temple, तब भी that's a minute to पहला व्यू बताकर दूसरा व्यू बताया. मे बी फॉर ए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ही माइट हैव सung दिस. समझ आया? सो ट्यू व्यूज है इस भजन संगीत का. क्या क्या है? पहला, दूसरा सामुएल चैप्टर 5 वर्स 11,
और चैप्टर 5 के अनुसार या पहला क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 के अनुसार दाऊद खुद के लिए घर बनाया था, तब डेडिकेशन का समय गाया होगा, नहीं तो मे बी फॉर द फ्यूचर और मे बी विथ ए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन गाया होगा। दो व्यूज है, समझ के रखना, वो पूरा ये पैराग्राफ के अंदर है। डिविजन, इंट्रोडक्शन एंड प्रेज वर्सेस 1 to 3। डिविजन, इंट्रोडक्शन एंड प्रेज वर्सेस 1 to 3। So if you consider Psalm number 26, 27, 28, 29, word of prayer, Psalm number 30 stands as answer for those prayers. Why? Verse 1 says that, I will extol you, Lord, for you have drawn me up. पिट के बारे में बातें किया था, अभी मुझे ऊंचा किया, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद करूंगा। सो 25, 26, 27, 28, 29 एक प्रार्थना का रूप में आप लोग प्रचार में लिया तो भी यू कैन कंक्लूड बाय सेइंग, साम नंबर 30 में देखना, इतना दिन रोने का अवस्था था, अभी भजन संगीतकार खुद बताता है, मैं सुबह उठता हूं खुशी के साथ, मैं नाचते हुए आनंद मना रहा हूं। समझ आया कैसा कनेक्शन आया साम नंबर 30 का पहले वचन में? भाई बिकॉज प्रार्थना का उत्तर मिला, तब धन्यवाद के साथ भजन संगीत 30 को शुरू किया। ए कॉल टू वर्शिप 4 to 5, आराधना के लिए एक बुलाहट। जस्ट लाइक वी से गॉड ब्लेस्ड मी विद दिस, यू ऑल्सो प्रे, यू ऑल्सो वर्शिप गॉड, ही विल ब्लेस यू। जैसे हम भी बोलते हैं मुझे परमेश्वर से अनुग्रह मिला, आप लोग भी उसे आराधना और प्रार्थना करना, आपको भी मिलेगा। सेम वे कॉल टू वर्शिप 4 to 5। 6 to 10 पर्सनल टेस्टिमोनी, खुद का गवाही 6 to 10। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट इज अ पर्सनल टेस्टिमोनी? रीड वर्स 6। As for me, I said in my possibilities, I shall never be moved. But your favor, O Lord. So there is a construction in a grammatical way. As for me, मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर बैठने वाला सब कुछ दर्द से, पेनफुल सिचुएशन से गया होगा। सो मे बी out of 23, 22 are going through kind of painful situation. One fellow will stand and say, as for me, I did not go through any kind of situation, my Lord was with me. So it is something personal. So here verses 6 to 7, 6 to 10, that is a personal experience of David and personal confidence, self-confidence of David. And 11 and 12, thanksgiving and conclusion. 11 and 12, thanksgiving and conclusion. Theological themes, divine deliverance and healing, first part, which means प्रचार के लिए टाइटल you can take this, divine deliverance and healing. So if you connect this psalm with psalm number 28, here the 28 he said that God is deaf and he is silent, but here God is not silent, he answered him. That's why he is saying divine deliverance and healing took place in his life. You can connect that point with psalm number 103 verse 3. Then the transcendence of suffering, which means वो सफरिंग कैसा बदलकर एक टेस्टिमोनी में बदलेगा, वो बात लिखा है। द डेंजर ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, खुद की शक्ति में, खुद की ताकत में भरोसा रख के जिया तो क्या मुसीबत हमारे जीवन में आएगा। तीसरी बात है उन्होंने बताया दैट यू कैन कनेक्ट विथ वर्सेस 6 and 7। उन्होंने खुद के बारे में कुछ बताने के समय उसका मीनिंग ऐसा था, as for me, I said in my prosperity, I shall never be moved. But your favor, O Lord, you made my mountain stand strong. कैसा बता रहा है, मैं सब कुछ मेरे जीवन में ठीक था, मैंने क्या बोला, मैं कभी नहीं हिलता हूं। उसके बाद तुरंत बोला परमेश्वर ऐसा नहीं,
आपकी मदद से मैं आज तक खड़ा हूं, मेरा कुछ नहीं है। सो वो ये मुझे समझाना चाहता है, कुछ अच्छा होने के समय इफ यू और इफ आई थिंक आई एम एनफ फॉर माई ऑल थिंग्स, ऑल माई रिसोर्सेस आई कैन डू, दैट इज नॉट द राइट थिंग। वो समझाने के लिए और वो सब कुछ पूरा करने के लिए सिर्फ परमेश्वर से ही होता है। हिंदी में पढ़ के देखिए और अच्छे से समझ आएगा। देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल, वहां लिखा है यू टर्न्ड, वो कौन सी वचन में है? यू टर्न्ड माई मॉर्निंग इनटू डांसिंग, वो वचन कहाँ है? 11. So you can see there is a transformation and renewal process that took place in the life of David. This dancing का कहानी को if you connect it with 2 Samuel chapter 6, some connection is there. नाचता है उन्होंने, वो कब होता है? वादा का संदूक लेके आकर रखने के बाद। सो मे बी एट दैट टाइम ऑल्सो गायब होगा, मे बी, क्योंकि नाचने का वो एक वर्ब को लेकर करके देखा था, क्योंकि वहां भी नाचा था, तब पति ने बोला ये पागल के समान नाच रहे, पत्नी ने बोला, सॉरी, जिसको उठा के लेके आए थे वो बोली, ऐसा बोल दिया कि देन इटर्नल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद के साथ भजन को समाप्त करता है, जाके जस्ट लाइक अदर साम्स इट कंक्लूड विद थैंक्स गिविंग एंड प्रेजिंग गॉड। This is not simply praising, he is saying praising forever, continues. So it also uses parallelism, imagery, metaphor, repetition, contrast. What does it mean by contrast? उदाहरण, सुबह के बारे में सुबह ऐसा था करके बताता है, शाम को ऐसा नहीं था। So two different बात है। Historical and cultural significance. Psalm 30 holds significant historical and cultural importance in both Jewish and Christian tradition. In Jewish liturgy, it is recited during the feast of dedication, Hanukkah, on the occasion of Thanksgiving. कोई भी चीजें या टेम्पल या ऐसा वाला चीजें डेडिकेट करने के समय ये लोग इस भजन संगीत को लेकर गाते थे, बोथ क्रिश्चियन एंड जूइश। हम भी कुछ डेडिकेशन करने के समय भजन संगीत को लेकर हम भी उपयोग कर सकता है। In Christian tradition, Psalm 30 is often read during Easter. Easter का पर्व के समय में भी क्रिश्चियन लोग इस भजन संगीता को लेकर गाते थे। And it also has a spiritual meaning, a kind of a dead life, मतलब मरा हुआ एक अनुभव से हमको एक नया जीवन मिलने का समय हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर, मैं मेरे जीवन को आपको डेडिकेट। So you can connect it with 2 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. We are the temple. So when we submit ourselves into the hands of God, we can take this psalm and you can pray. समझिए? So अलग अलग कनेक्शन तो है प्रचार करने के समय। Theological implications. It speaks about the nature of God. For example, He is faithful, He is righteous, and He will surely help. And this psalm says that My sorrow became joy. एक समय था सफरिंग का, अभी वो सफरिंग सारे एक अच्छा गवाही बन गया। So it speaks about the character of God, right? परमेश्वर कैसा उन लोगों को मदद किया, सफरिंग भी था, आज वो सफरिंग नहीं है, वो गवाही की तरह जैसा बदल गया। सो परमेश्वर कैसा वाला मर्सीफुल गॉड है, राइचस गॉड है, फेथफुल गॉड है, उन्होंने कैसा मदद किया, हमारा प्रार्थना को सुनता है, इतना सारे मीनिंग को भजन संगीता 30 हमको सुनाता है। क्यों? एक बड़ा प्रार्थना के बाद आकर धन्यवाद की गीत लिखा है। सो यू कैन कनेक्ट इट विद दैट एंड यू कैन प्रीच। सो इन वर्शिप, इन Jewish tradition, they used to recite this psalm during the morning prayer. Why? Because
वचन में लिखा है, क्या लिखा वचन 11 में? वो वाला मॉर्निंग नहीं, वचन, हाँ वचन 5 में। तो यहूदी लोग इस भजन संहिता को सुबह का प्रार्थना में इस्तेमाल करते थे। So there are different views. पंडित लोग इसका अलग अलग व्यूज दिया। Some says that it was sung during temple dedication, और नहीं तो हमने अभी अलग अलग कुछ कुछ बातें मैंने बताया वो समय पे। And some even says that वो कुछ इलनेस से, कुछ बीमार से छुटकारा मिलने के समय भी इस भजन संगीत का गाया था। इसलिए मैंने बोला जीवन को नया होकर, नया, when we get a new life after a kind of suffering, मे बी फिजिकल सफरिंग और मेंटल सफरिंग, जीवन को डेडिकेशन करते हुए इस भजन सिंह को गायक होकर करके कुछ लोग बताता है, बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रू। सो कंक्लूजन, ये भी भजन संगीत है दाऊद ने लिखा, एंड मे बी इट इज ऑल अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, बिकॉज इट ऑलवेज in many places it use the word it use the personal pronoun I, but it also has some connection with a public worship. Why? Because the heading says that temple dedication. So during the time of dedication there is a community, society means समाज का रूप खड़े होता है वहाँ। In both sense, if it is a connection with the grammatical construction I, maybe it is very personal to David. Illness, कुछ बीमार होकर उसमें से छुटकारा मिलने के समय भी किया होगा। If not, it is a community worship, तब भी गाया होगा, नहीं तो टेम्पल। एंड आई टोल्ड व्हेन वी रीड द हेडिंग टेम्पल, हमको पता नहीं है ये टेम्पल का दो अलग अलग मीनिंग आया है। हाउस करके आया, ऐसे है तो पहला शमूएल 5:11 के आंसर, क्योंकि दाऊद खुद के लिए घर बनाया था, वो तो दाऊद के समय ही पूरा हुआ था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेविड ओनली हिज ओन हाउस कंस्ट्रक्शन was done, but the temple construction was done during the time of Solomon. So after that only सुलेमान ने डेडिकेशन किया टेम्पल। हाँ हाउस लिखा है एनकेजीबी में। सो फर्स्ट किंग चैप्टर 7 से लेकर पढ़ के देखा तो सुलेमान ने टेम्पल का बातें सब कुछ करता है। सो संगे क्लिक, इज देयर एनी डाउट फ्रॉम